And our top story from the AI Summit: politics has cast a shadow over the Impact Summit after dramatic scenes unfolded inside the venue. Members of the Indian Youth Congress staged a protest within Bharat Mandapam, with some demonstrators carrying out a shirtless protest and raising slogans against Prime Minister Narendra Modi and the central government, citing the India-US trade deal. The BJP has accused the Congress of exposing what it called an anti-India mindset and tarnishing the nation's image during a high-profile global summit. Meanwhile, the Delhi police has confirmed arrests have been made. 4 to 5 people have been detained so far, and authorities have verified how these individuals gained entry. Several of them top members of the Indian Youth Congress, several members who registered themselves for the AI Summit and gained entry to hold this protest. Listen into the reactions coming in from Ground Zero as the BJP has declared war on the Congress for shaming India on the international stage. सर, ये पूरी घटना कितने बजे की और क्या हुआ था? लगभग 12:30 बजे कुछ लोग वैलिड क्यूआर कोड के साथ में, जो जनता को सभी को रजिस्ट्रेशन के लिए मेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर किया और उस क्यूआर कोड को लेके भारत मंडपम में एंट्री की। इन्होंने जो ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट डिस्प्ले किया, उसके ऊपर से इन्होंने स्वेटर जैकेट पहने हुए थे। हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में आके इन्होंने स्वेटर और जैकेट को उतारा और ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट के साथ में प्रोटेस्ट किया। ये इंडियन यूथ कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। इनमें से 4 लोगों को हमने डिटेन किया है, बाकी की पहचान कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन कर रहे हैं। सर, टोटल कितने ये कार्यकर्ता थे और कैसे एंट्री करी इन्होंने और ये किस जगह घटना हुई है अंदर, ये किस हॉल में? ये मेटी की वेबसाइट पे इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, जिससे इनके ईमेल पे क्यूआर कोड आया। इन्होंने क्यूआर कोड डिस्प्ले करके एंट्री की और अपनी जो टी शर्ट थी, टी शर्ट के ऊपर स्वेटर और जैकेट पहना था इंडियन यूथ कांग्रेस के सभी वर्कर्स ने। इन्होंने लॉबी एरिया जो है हॉल नंबर 5 का, वहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनमें से 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया, बाकी की भी हम पहचान कर रहे हैं। सर, आप लोगों ने वहीं पे इनको काबू कर लिया था? पुलिस की प्रेजेंस काफी थी वहाँ पर? हाँ, हमने वहाँ पे उनको 4 लोगों को उनमें से डिटेन कर। सर, ये कौन लोग हैं, क्या नाम है इनका, क्या डेजिग्नेशन है? ये इंडियन यूथ कांग्रेस के ही वर्कर हैं। जो हमने डिटेन किए उनमें से एक का नाम कृष्णा हरी है, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं 35 साल के। दूसरे कुंदन लाल यादव, जो राष्ट्रीय या प्रदेश सचिव हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। तीसरे अजय कुमार हैं, जो यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्वी यूपी के। और नरसिम्हा यादव, जो तेलंगाना के रहने वाले हैं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन यूथ कांग्रेस। सर, एक आखिरी सवाल, क्या इसके पीछे कोई लॉर्ड्स कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है सर? क्योंकि इमेज खराब करने की कोशिश की गई सरकार की, देश की एक तरह का इंटरनेशनल इवेंट था। निश्चित ही इसमें हम लीगल एक्शन लेंगे, अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा और हर एंगल की इसकी जांच जरूर की जाएगी। उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। ज़रूर वो काफ़ी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। और दूसरी बात, भारत जब तेज़ी से आगे जा रहा है, जैसे नौजवानों की आवाज़ आपने सुनी, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर बेसिकली दे आर लुकिंग एट दिस एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर देम, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड कीप द समिट above politics. We should make sure that everybody supports, everybody cooperates with this effort. Then only the country can grow forward. अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज़ में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है, और वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं,
लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। And it's not just the top BJP leadership. Congress across the spectrum, even on social media, is facing allegations of a gross political miscalculation by insulting India on the international stage. And these aren't just standard cadre-based workers of the Congress party, ladies and gentlemen. These are senior members of the Indian Youth Congress. This man is believed to be Krishna Hari. He is a national secretary of the Indian Youth Congress, and at the same time he's a senior leader from the Bihar cadre of the Indian Youth Congress. Also another individual, Narsimha Yadav, he hails from Telangana. He is in close, this individual on your screen right here, this individual has close proximity to the likes of Priyanka Gandhi Vadra as well as Telangana Chief Minister Revanth Reddy. So these aren't your run-of-the-mill Congress cadre, those people who can be enticed into doing something like this. These individuals are senior leaders of the Indian Youth Congress, and you can see the way they protested over here. Clearly, as per the BJP and as per the Delhi police as well, this was a completely planned protest because you have to register, you are issued QR codes to make an entry into the summit. So clearly, with all these t-shirts, with this entire plan to stage this protest without their shirts in front of over 100 nations who are seeing India's AI prowess, it clearly shows that this was a planned protest. It can't be run-of-the-mill. And the Indian Youth Congress on its Twitter page has said that they were planning to raise the issues when it comes to the India-US trade deal, claiming that India's farmers have been left vulnerable. But at the same time, it has completely backfired because, as you can see over here, Narsimha Yadav present there at the protest. And here a photo of Narsimha Yadav from the Telangana Congress unit with not just Revanth Reddy, but also Wayanad MP and senior Congress leader Priyanka Gandhi Vadra over there having that photo with her. So these aren't your run-of-the-mill Congress workers. These are senior leaders of the Indian Youth Congress. At the same time, it was a planned protest to shame India on the international stage. I'm joined by my colleagues Payal Mehta as well as Ananya Bhatnagar on the broadcast. So, Payal, clearly the BJP going hammer and tongs against the Congress facing a lot of wrath as well as trolling on social media for embarrassing India on the international stage. So enough ammunition for the BJP to corner the Congress as this stunt has completely backfired. Well, to begin with, when the visuals first came out, it was the common man who was there at the summit who slammed the Congress party for this small talk and for this kind of behavior that has been displayed as well. It's not just the political leaders. Every Indian who took pride in the fact that India was hosting a summit of that magnitude, which actually got the Guinness Book of World Records registered as well. Why is the Congress party doing this? What is the Congress party really up to? What is their ulterior motive? Time and again, Rahul Gandhi has spoken about what Gen Z needs to do, how they need to take matters in their own hands. And, Ayushman, we've seen what happened in our neighboring nation. Time and again, Prime Minister said that the youth of India is very, very sensible. They know what they need to do as well. And they do not need to get carried away by any talk. Is there a larger plan that the Congress party and Rahul Gandhi's brigade need to have against the country? In the past, also Rahul Gandhi has gone ahead overseas, spoken all kind of rubbish, if I may say so, about the country, and then gotten back as well. Remember, he must also remember that he's been elected to the Lok Sabha, which is part of the being in the Indian. He's been sworn in because he's an Indian as well. So that's something which has been there, and therefore, time and again, Ayushman PM Narendra Modi has come out and said that the Congress party is not being ruled here. Their strings are also overseas, and probably they're drawing in inspiration and their agenda from countries which are anti-India as well. So the very, very shameful episode coming to the fore in those videos. You can also see that the locals over there who were also there at the summit, but we are asking these people to just leave from the premises. It is not political party workers who are asking them to leave, but the common man felt that they are being ashamed, that people who come in from far and wide, from 100 countries. Yesterday was a big summit that happened because of the kind of excitement that existed in the minds of the people. The expo has been extended by another day as well. So Saturday was when the expo will continue.
continue for the common man to come and really watch, but disgusting behavior on display, and that is being criticized by everybody. Forget about the BJP being excited of an opportunity to slam the Congress party. Many in the political system tell you that this is a big self-goal by the Congress party. Absolutely. And people on social media continuously post these videos of Indians behaving badly abroad. And imagine senior leaders of the Congress party behaving like that in front of the world at one of the biggest international summits on artificial intelligence, happening right in our own country in front of the entire world. This entire stunt has completely backfired, and it seems voices from within the India bloc are also calling it out. We're getting a reaction